रोड बड़ा शानदार हो, आपको तेज़ी से यहाँ से वहाँ आना जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके उस शहर पे लोड कम हो जाता है, लोग दूसरे शहर में, बराबर वाले शहर में रहना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडियाज़ मेगा प्रोजेक्ट्स दैट्स मेक अमेरिकन जेलस। देखते हैं इस वीडियो को क्या है। The world's largest democracy. India is not only making headlines for its cultural diversity and rich heritage, but also for its astounding infrastructure projects. India has emerged as a formidable contender on the global stage. No longer an underdog, but a nation that stands tall among world leaders and powerful nations. Its remarkable economic stability and growth are complemented by a range of ongoing and completed megaprojects across various domains, boosting the nation's overall development. With numerous government initiatives in progress, this video delves into the top 10 megaprojects in India that are set to reshape its economic landscape. Number 1. India Bullet Train. At the forefront of India's infrastructure revolution stands the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail Project, often referred to as India's bullet train. This groundbreaking initiative is expected to redefine the country's transportation landscape and elevate its global standing. India's first bullet train project, connecting Mumbai and Ahmedabad, was initiated by the National High-Speed Rail Corporation. Originally slated for an April 2020 start, the project faced significant construction delays. However, recent updates indicate that it's on track for completion by December 2023. The 352-kilometer Mumbai-Gujarat stretch is expected to become operational by 2027, with a 50-kilometer portion between Surat and Bilmora set to finish by 2026. These developments signify progress towards a faster and more efficient rail network in India. Number 2. The Chenab Railway Bridge. The Chenab Railway Bridge, an engineering marvel in the heart of India's Jammu and Kashmir region, shows the country's dedication to modern infrastructure. This remarkable bridge is set to become the world's highest railway bridge, surpassing even the iconic Eiffel Tower in height. It's the tallest rail bridge globally, sitting about 358 meters above sea level. It stretches across the Chenab River and is made of steel and concrete. It covers a long distance of 42 kilometers between Bakal and Kauri. Construction began in November 2017. This bridge is exceptionally high, at 359 meters above ground, with a total length of 1,315 meters. The Northern Railway led this project, and it has a unique arc shape supported by two strong steel trusses. It's expected to be operational by January to February 2024, with plans to run Vande Bharat and Vande Metro trains between Jammu and Srinagar, cutting travel time to just 3.5 hours. Number 3. Navi Mumbai Airport. The Navi Mumbai Airport is a game changer in India's aviation landscape, located in the bustling city of Navi Mumbai. This airport project aims to relieve congestion at Mumbai's existing airport and bolster air travel accessibility. The Navi Mumbai International Airport, also known as the DB Patil International Airport, is a new airport being built in Navi Mumbai, Maharashtra, India. It's a second airport for Mumbai, alongside the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. The City and Industrial Development Corporation is constructing this Greenfield International Airport. It'll be developed in 3 phases. In the first phase, it'll be able to handle 25 million passengers per year. Eventually, in the third phase, it'll have the capacity to serve more than 90 million passengers annually. L&T Infrastructure Engineering Limited is helping design the airport, and RITES is preparing the master plan. Jacobs Engineering Group from Texas has worked on the terminal design, while Zaha Hadid Architects from London has designed the passenger terminals and the air traffic control tower. Construction started in August 2021, and the airport is expected to be fully operational by 2024. This new airport will offer more options for travelers in the Mumbai region. Number 4. The P Royale.
The P Royale is a striking architectural marvel under construction in Worli, Mumbai, India. This project shows India's growing appetite for luxury and innovation. The skyscraper stands tall at 320 meters, which is 1,050 feet, making it the tallest building and the third tallest structure in India. While they finished the main structure in 2018, the outside and inside are still a work in progress, with an expected completion date of December 31, 2023. When it's finished, the building will house 120 apartments, and they'll be quite spacious, ranging from 740 to 1,300 square meters, equivalent to 8,000 to 14,000 square feet. They're building it on land that used to belong to Shri Ram Mills Limited. They got permission to start building in 2005, and actual construction began in 2008. However, there were some delays due to legal challenges from organizations like Janit Manch and UHRF in Delhi. These issues were resolved by the Supreme Court of India in October 2019. It was believed that these challenges were more about competition than genuine concerns. Number 5. Mumbai Trans-Harbour Link. The Mumbai Trans-Harbour Link, also called the Suri Nava Sheva Trans-Harbour Link or Shri Atal Bihari Vajpayee Trans-Harbour Link, is one of India's megaprojects. They're building a 21.8-kilometer long, 6-lane road bridge that'll connect Mumbai to its satellite city, Navi, Mumbai. When it's finished, it'll be the longest sea bridge in India. The bridge will start in Suri, South Mumbai, cross Thane Creek, north of Elephanta Island, and end at Chirla, near Nava Sheva. It will connect the Mumbai-Pune Expressway in the east and the under-construction coastal road in the west. This 6-lane highway will be 27 meters wide and will also have 2 emergency exit lanes, an edge strip, and a crash barrier. The whole project is expected to cost 17,843 crore, or about $2.2 billion. They awarded contracts in November 2017, and construction began in April 2018. But it got delayed by about 8 months because of the COVID-19 pandemic. They now plan to finish it by December 2023, and it's estimated that 70,000 vehicles will use the bridge every day when it's open. The bridge will make travel between Mumbai and Navi Mumbai much easier. Number 6. Dollara Solar Park. The Dollara Solar Park is a major solar project planned for the Dollara Special Investment Region in Gujarat, India. Gujarat is known for its vast potential for solar power generation, and this project aims to harness that potential on an enormous scale. This project falls under the category of an ultra-mega solar power project, recognized by the Ministry of New and Renewable Energy of the Indian government. The plan is to reach a capacity of 5 gigawatts by 2030. This aligns with the Indian government's goal to increase renewable energy production to 175 gigawatts by 2022 as part of the National Solar Mission. Originally, India aimed for 20 gigawatts by 2022, but they achieved this target much earlier, prompting to an increase to 100 gigawatts. In April 2018, the Chief Minister of Gujarat approved the Dollara Solar Park. This project is a significant step towards harnessing solar energy to meet India's growing power needs. Number 7. Dollara Smart City. Dollara Smart City is an exciting new project in Gujarat, India, aiming to create a modern, sustainable, and forward-looking city for both current and future generations. This city focuses on providing a good quality of life for its residents, making it a great place to live and work. The project covers a vast area of around 11,000 hectares of land, located about 60 kilometers from Ahmedabad, Gujarat's largest city. To give you an idea of its size, Dollara Smart City is about 7 times bigger than Singapore. This city is still in the construction phase, and the Indian government's goal is to offer affordable housing, sustainable living conditions, and essential services to its future residents. It's important to note that Dollara was once an ancient port city and now transforms into a smart city, blending history with modernity. Dollara Smart City is a significant industrial and urban development project in India. It's been in the planning stages since 2007 and involves 2 main parts, an industrial area and an urban area.
The city will be built over the industrial region, and part of it will be an elevated, pedestrian-friendly area known as the Gateway City area. This project is a remarkable step towards creating a fully integrated urban area from scratch, making it a prominent initiative in India's development landscape. Number 8. The Delhi-Mumbai Expressway. The Delhi-Mumbai Expressway is a massive project under construction in India. It's an 8-lane expressway that will cover a distance of 1,350 kilometers, connecting the capital city Delhi to the financial hub Mumbai. The project began on March 8, 2019. This expressway will be a game changer, cutting travel time from 24 hours to just 12 hours, making it much faster to get between Delhi and Mumbai. They're also planning for the future by reserving land for an additional 4 lanes when needed. This project is one of India's most ambitious future endeavors, and it's expected to have a significant impact on the country's economic growth. The total cost of the project, including hand acquisition, is around 1 million crores, or about 13.1 billion US dollars. India is forging ahead, leaving a mark on the global stage. What do you think? Share your thoughts in the comment section below. जी जनाब, आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि यूरोपियन और अंग्रेज़ भी, अमेरिकन भी इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं इंडिया में और कौन कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जिस तरीके से वो बयान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वाकई जो कि चनाब ब्रिज है वो तो अपने आप में मैं कहूँगा कि एक वाकई ही एक इंजीनियरिंग का शाहकार है, यानी कि दुनिया के इंजीनियर्स को हैरान करके रख दिया होगा उस चनाब ब्रिज ने कि यार ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह पॉसिबल है। आपको पता है रॉकी पहाड़ जो होते हैं वो लाजमी नहीं होता कि रॉक होते हैं, वो किस तरीके से बने हुए होते हैं, फिर उसको किस तरीके से इतना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा, तो ये अपने आप में एक कमाल करके दिखा दिया। और सबसे अच्छी सबसे खूबसूरत बात कि अपने ही देश के इंजीनियर, दूसरे इंजीनियर्स भी होंगे, बाहर के इंजीनियर्स भी होंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि आत्मनिर्भर, कल हमें वो चीज़ दोबारा बनानी हो तब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बाहर वालों से अगर काम लिया भी जाता है तो उनसे सीखा जाता है, फिर दोबारा से उनकी ज़रूरत ना पड़े, खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए उस काम में। बाकी सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है या सबसे जिस पर सबकी ज़्यादा नज़रें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, बुलेट ट्रेन का। और बुलेट ट्रेन का मैं कहूँगा सबको इंतज़ार है, तो मैं कहूँगा बुलेट ट्रेन का तो वो प्रोजेक्ट है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, कोविड की वजह से और लैंड ख़रीदने की वजह से, इक्वाइजेशन क्या कहेंगे, मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लैंड ख़रीदने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब कहते हैं कि सारा काम हो गया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था लैंड वाला। बाकी ये कि समंदरों को चीर दिया, इतना बड़ा ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई को मिलाने वाला, यानी कि यूँ समझ लें कि इस ब्रिज के बाद जो है, इस ब्रिज की वजह से दोनों शहर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और मुंबई का जो लोड है उस पर बहुत कम असर पड़ेगा। किसी वीडियो में मैं सुन भी रहा था कि लोग डेवलप सिटी में रहना चाहते हैं, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब आपके शहर के साथ ही दूसरा शहर बस जाए, लेकिन शर्त ये हो कि वो करीब हो और कनेक्टिविटी आसान हो, रोड बड़ा शानदार हो, आपको तेज़ी से यहाँ से वहाँ आना जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके उस शहर पे लोड कम हो जाता है, लोग दूसरे शहर में, बराबर वाले शहर में रहना पसंद करते हैं। उसकी कॉस्ट भी कम आती है, आना जाना पड़ता है, लेकिन वो कॉस्ट वहाँ कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन लोग शहर के अंदर रहने के बजाय, महंगी रिहाइश के बजाय थोड़ा सा बाहर रहना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पड़ जाता है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट हैं, मतलब सबसे हैरान कुन बात यह है कि अमेरिकन्स को इस पे नज़र है, अमेरिकन इस पे वीडियोस बनाते हैं, ये मेरे लिए शॉकिंग है। मैं समझ रहा था कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग शायद इस पे रिएक्शन देते हैं या इस पे हैरान होते हैं, तो अमेरिकन भी कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली,
تو کس طریقے سے یورپی کنٹریز کے میڈیا نے نیگیٹو باتیں کی تھیں، کس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ڈونیشن دیا ہوا ہے این جی اوز کو اتنے بلین کا، وہ ہمیں واپس کیا جائے، آپ کا تو دیش ڈیولپ دیش ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہ پورے ریجن کو انہوں نے بالکل ہی ناکارہ کر کے چھوڑا، لوٹ کے چلے گئے وہ لوگ اس جگہ کو. اور انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں کا جو دیش ہوگا وہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کرے گا، اتنی زیادہ ترقی کرے گا، وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جو بھی ہیں ہم ساتھ تھے، ہمیں بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا ان کو جیلسی ہوتی ہے، ہمیں اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، بے شک وہ انڈیا کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ.